Hello and welcome to JV's IAS, and today we are here with again one of the series. इस सीरीज में हम डेली MCQs डिस्कस करते हैं and this will be a continuation of the series, and today also we will discuss some of the current affairs based MCQs, and these MCQs are drawn from different current affairs sources like PIB, the Hindu Indian Express and all other major news platforms, which we bring in here to you in order to make this sure that you practice current affairs on daily basis, so that your portion of current affairs, which has a weightage of around 30 to 40% in UPSC. As we have seen in previous year papers from last 10 years, the current affairs section has too much of weightage which has been given by UPSC to it in its papers. Fine. This is JV's learning app, which you can download by scanning this QR code, and you can find this app on Android as well as iOS platforms. You will download it, you will get access to way more resources which you require for UPSC preparation. Fine. JV's Parikshanam 2.0. This is an integrated test series which will help you in preparing prelims as well as mains simultaneously. Like, you're not having anymore the headache of synchronizing two different test series from two different coachings or a single coaching, two different test series which were tackling before prelims separately and mains separately. What we at JV's IAS have brought to you is an integrated approach. What do I mean by integrated approach is that once you start this Parikshanam 2.0, it will give you a year-long study plan, and according to this study plan, the micro topics will be divided for each day. This will be a 360 days program in order to make you comfortable enough to revise entire syllabus at least 5 times. Fine. And once you are doing this thing, अगर आप 5 बार कोई इस सिलेबस को रिवाइज करते हो, देन बी श्योर कि आपका सिलेक्शन के चांसेस बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाते हैं. फाइन. इस टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको इंडिविजुअल मेंटोरशिप का सपोर्ट मिलेगा, एंड द मेंटोर्स आर एक्सेसिबल टू यू डायरेक्टली वाया कॉल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और ईमेल. फाइन. दिस कोर्स ड्यूरेशन विल बी 12 months as I said. Fine. You can enroll to this course by logging into www.jatinvarma.org. Yes, moving to our series, the first question is from international relations. Let's read the question together and we'll try to attempt this question together. It has 4 options, 4 statements given in it, and it says that the first statement is India nuclear test success made a substantial shift in the nature of bilateral political ties. As we see that a nuclear test in itself is an event which is historical in nature, तो जाहिर सी बात है political nature में भी ये एक shift पैदा करेगा. And now after that, if it was earlier US Asia in the international arena, now it's US India, or even earlier if it was Asia, now it's Indo-Pacific, which is being in the discourse from last many years since this nuclear test was done. Then second statement is about Malabar naval exercise. तो पहला statement कैसा है? पहला statement is a plain statement which we can mark tick. Then Malabar naval exercise स्टार्ट कैसे हुआ था? नाउ इट्स क्वाड नेशंस, 4 नेशंस. नाउ इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द 4 नेशंस ऑफ क्वाड. Simple statement, we must be knowing about this Malabar exercise. Having too much of strategy in the international arena, this is possibly that we will mark it right. Then the third option or the third statement talks about the independent foreign policy, which has been the guiding principle for Indian establishments since the very inception. So हमको पता है that we adopted to NAM, ठीक है, beginning से ही हम independent रहे हैं. Since our independence we have been following NAM,
ठीक है, तो इंसेप्शन से ही हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल क्या था? इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। करेक्ट स्टेटमेंट। देन इंडिया हैज बॉयकॉटेड बीजिंग ओलंपिक्स टू कॉन्डेम द ह्यूमन राइट अब्यूजेस। फाइन। तो स्टेटमेंट फोर्थ क्या बोलता है? इट्स अबाउट ह्यूमन राइट अब्यूजेस विच रिसेंटली इंडिया हैज condemned. So obviously India is a welfareistic nation and it rightly respects the human rights of all whoever is there in the world. We also have a section fundamental rights in our constitution, so that is why this statement obviously is true. So the answer here will be D. Fine, you can read the explanation and the answer is D. Let's move to the question number 2. Question number 2 is about Ramsar sites which were recently in India. अभी थोड़ी sites बड़ी भी हैं हमारी. Fine. Let me know what's the total number of Ramsar sites at present. कितना है? Let me know in the comment section. And then UP has the highest number of Ramsar sites followed by Tamil Nadu. Yes, this is very important statement because you must be knowing this thing that which state has the highest number of wildlife sanctuaries, national parks, Ramsar sites, anything, conservation sites. At least आपको, अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो एक SSC के स्टूडेंट को भी पता होता है that what is the highest number. ठीक है, which state has the highest rank, which state is on the top. Fine. अगर आपको ये स्टेटमेंट आता है then you can easily judge this question. And the answer here will be D. Why? Because you will eliminate 1 and 2. Fine. And why is the answer D? Because third statement भी correct है. This is the largest earthen dam. Fine. तो ये चीज जरूरी है कि आपको दो चीजें पता हो. एक what is the highest and then next which is the largest. Fine. And where is it located? So statement 1 is correct, 2 and 3 are, 1 is incorrect and 2 and 3 are correct. PIB की न्यूज थी some days back. Now question number 13, question number 3. Question number 3 talks about the quantum key distribution. Fine. Communication का एक essential element है now, a part which believes in this quantum key और quantum key distribution क्यों है? In order to ensure secure communication between two devices. Fine. अब क्या बोल रहे हैं? That QKD is developed by QNU Labs under the aegis of Innovation for Defense Excellence. That is IDEX के अंदर ये innovate हुआ था. तो this statement is correct because yes, this is true that it was developed under the aegis of IDEX. Fine. Statement 2. Statement 2 is about QKD security is attained through two laws. What are the two main laws of QKD? Are superposition and entanglement. You must be knowing about these two laws and how much importance does they hold. So therefore statement 2 is also correct. Is an operational framework of defense organization. Fine. Currently ये operation में है हमारी Defense Innovation Organization में. Yes, this statement also is true. So here the answer is D. I hope you must be knowing about this thing here, and if you don't know, keep a note of this thing, quantum key distribution. You can take some cue from the explanation also, and this is very much important. This topic which you must be knowing about the laws of superposition and entanglement also. What is QKD system and how it works? You can take a snip of this slide and you can save it for your further reference, that how the encryption and how the encryptors and decryptors are used in a parallel sequence, so that the message passed here is passed with minimum disturbances and with full privacy. Then question number 4. Question number 4 talks about the India's relationship with Taliban. अब अभी हमको पता है that Taliban came to power in Afghanistan. Fine. And India had a key strategic partner like Afghanistan as a roadway or a gateway towards what? Central Asia.
सेंट्रल एशिया के रिसोर्सेज के लिए हमारे पास एक ऐसा एलाई बन गया था दैट वी कैन हैव, हम अफगानिस्तान हमारे पास एक्सेसिबल होता, देन वी कुड हैव हैड एन अपर हैंड इन दी सेंट्रल एशिया। फाइन, अब इसके रिलेशंस को देखते हैं। देन काबुल वांट्स इंडिया टू कंप्लीट दी शाहतूत डैम प्रोजेक्ट इन अफगानिस्तान। Obviously they will want us to complete this project. Why wouldn't they? Because their infrastructure is developing. Fine. Then statement 2 talks about Taliban is keen to enhance connectivity using Tapi and Chabahar port in Iran. Taliban is keen to enhance the connectivity with Tapi and Chabahar port. Is Taliban really keen? Yes, they have shown their interest many times. The major challenge in India-Afghanistan relations is attacking minorities in Afghanistan. Fine. अब यहाँ पे minorities का जो attacks आते हैं या persecution जिसको हम बोलते हैं, फाइन, इसी की बेसिस पे हम लेके आए थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट फॉर व्हाट, फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज। ठीक है, हम ये एक्ट भी लेके आए, वी मेड चेंजेस एट अवर नेशनल लेवल ऑल्सो, वी ब्रॉट सम रिफॉर्म्स फॉर दीज माइनॉरिटीज और फॉर दोज हु फ्लू एट दैट टाइम व्हेन तालिबान केम टू पावर। फाइन, हमारे यहाँ ही नहीं बाकी सारी कंट्रीज ने भी इनको वेलकम किया फॉर ऑन द बेसिस ऑफ ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस और समथिंग एल्स, लाइक कि इनकी हेल्प के लिए वी वेर एट द फ्रंट so that we can welcome them. However, the major challenge in our relationship with Afghanistan is, or for that matter Pakistan or Bangladesh, is that their minorities are being attacked, because ये वो minorities है जो हमारे इंडिया में भी रहती है। फाइन, तो minorities को कहीं पे भी अटैक होता है, then on the basis of on humanitarian grounds we have to help them. Fine, so that is the biggest challenge in our relationship. This is a quite plain statement जिसको हम ट्रू बोल सकते हैं, बिकॉज ये स्टेटमेंट ऐसा है जो नॉर्मली एक इंसान समझता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, एंड वी ऑल नो दैट यस इन अफगानिस्तान देर आर अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज, दिस इज क्वाइट एविडेंट एंड एवरीडे इन न्यूज ऑल्सो। फाइन, सो स्टेटमेंट 1, 2 and 3 आर करेक्ट, देयरफॉर द आंसर विल बी डी। यस, द आंसर विल बी डी हेयर। फाइन, एंड क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is about agriculture, as the first point says that the production of food grains in the country was higher in 2021, 2022, मतलब पिछले साल ज़्यादा थी उससे पिछले साल से, मतलब इस साल हमारी प्रोडक्शन बढ़ी है। सो दिस विल बी द रीसेंट डेटा। फाइन, क्योंकि 2023 तो अभी चल रहा है, मतलब 2022 to 2023 दिस फाइनेंशियल ईयर फॉर सर्वे, दिस इज स्टिल अंडर प्रोसेस। तो अभी इसका डेटा नहीं आया होगा पूरे साल का, बिकॉज ये आएगा 2023 के बाद। सो व्हाट इट सेज इज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री वाज हायर अर्लियर, वाज हायर इन प्रीवियस ईयर दैन द अर्लियर टाइम। यस, इट वुड बी बिकॉज 2021 या 2020-21 में कोविड का ज़्यादा इम्पैक्ट था दैन 2021-2022। फाइन, इसकी वजह से क्या हुआ था, फूड ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन थी, इवन दो देयर वाज प्रोडक्शन और देयर वेर लेस नंबर ऑफ लेबर्स विच वेर अवेलेबल, और द क्राइसिस सिचुएशन इन द कंट्री वाज लाइक दैट कि इस टाइम पे जो प्रोडक्शन था वो कम हो गया था। फाइन, ऑल्दो देयर वाज प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर वाज द ओनली लाइक वे आउट, और एग्रीकल्चर एक ऐसा जरिया बन गया था इस टाइम पे जिसने देश को बचाया, या जिसने उस टाइम पे इट हेल्प्ड अस इन मेनी वेज। फाइन, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट थी, या चाहे वो रिसोर्सेज थे, या चाहे वो लाइवलीहुड था, इट हेल्प्ड इन दैट। हाउएवर द प्रोडक्शन वाज लो। देन कम्स देयर is widespread unauthorized and unsafe use of 4 pesticides in India. Fine, yes, there is unauthorized and unsafe use of pesticides in India, and in this question, in this type of question, what you have to ensure is whether these 4 are pesticides or not. अगर यहाँ पे ट्रिक हुआ दैट इन 4 में से एक भी पेस्टिसाइड नहीं हुआ, फाइन, सो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, एंड एट दैट टाइम you will be sorry by saying that yes, there is widespread unauthorized unsafe use, but this is a tricky part here
that you must be knowing that whether these are those pesticides or not. Fine. So statement 3, हाँ यहाँ पे ये चारों pesticides हैं. In order to add to your knowledge, these 4 are pesticides only. Then 3, in India organic and natural farming is being promoted through Parampragat Krishi Vikas Yojana. Yes, this statement also is true. So question answer here is D. Fine. D is the answer. Question number 6. Question number 6 is about oil and petroleum reserves, which recently were in news because of the crisis in crude oil. Fine. So first thing is, India recently was asked by IEA to release 1200 million barrels of crude oil from strategic reserves. Fine. 1200 बिलियन क्रूड ऑयल रिजर्व्स हमें रिलीज करने हैं. वेदर हमें IEA बताए या नहीं बताए, दिस इज अ बिग अमाउंट एंड ये बहुत ही बड़ा क्वांटिटी यहाँ पे लिखा गया है. फाइन. सो इतना बड़ा क्वांटिटी या इतना बड़ा मिलियन बैरल्स वी कांट रिलीज फ्रॉम आवर स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स. सो दिस स्टेटमेंट हियर इज wrong. Then the move is aimed at claiming the crude oil prices. Fine. Okay. Why was this suggested by IEA? Because IEA did not suggest 1200, it actually suggested 120 million barrels. But yes, it was suggested to reclaim the crude oil prices which were slumped because अभी क्रूड ऑयल प्राइसेस पीक पे थे. क्यों पीक पे थे? क्योंकि रशिया यूक्रेन का डिस्प्यूट चल रहा था, उसकी वजह से. देन इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इज एट विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश. हमारा जो ये रिजर्व है ये कहाँ पे है? स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश. यस, दिस इज ट्रू. 1 is wrong, 2 and 3 is correct. So answer will be B. Fine. The question number 7 about honey sector. Fine. शहद लास्ट ईयर भी न्यूज में था, दिस ईयर ऑल्सो इन न्यूज. दिस NMR टेस्ट. फाइन. अब ये NMR टेस्ट क्या है? NMR टेस्ट इज अबाउट टेस्टिंग द एडल्ट्रेशन ऑफ हनी. फाइन. इट्स न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी टेस्ट. Out of 13 products which were tested last year, only 2 were there which passed the test actually, that yes, their honey was around 90% pure and less adulterated than others. Fine. So that is the epic of adulteration in such natural product which is quite healthy for all of us. Then statement 1 and 2, statement 1 and 2 should be there. The statement 1 says that honey mission program is one of the initiatives of Khadi, KVIC. Fine. KVIC का ये है initiative. Yes, it's true. Honey mission program is of KVIC. And then major honey producing areas are northeastern regions and Maharashtra. Fine. अब major honey producing region कौन है? This two you must be knowing, because अगर आप अगर हम देखें इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का सेक्शन, तो एग्रीकल्चर में या प्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दैट विच इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट, लोवेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट, कहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन है, कहाँ पे कम प्रोडक्शन है. अभी इकोनॉमिक ज्योग्राफी का भी पार्ट बन जाता है जब हम इसको मैपिंग के पर्सपेक्टिव से लेते हैं. फाइन. लाइवलीहुड के पर्सपेक्टिव से लेते हैं. सो इट्स अ मिक्स कि कहाँ पे प्रोडक्शन होती है, किस चीज़ की प्रोडक्शन होती है और कौन सा है इसका हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग एरिया. Therefore, we must be having such critical information at our hand. The answer here will be D. That is 1, 2 and 3. Fine. Question number 8, you can go through the explanation also here. That is about honey mission and nuclear magnetic resonance spectroscopy test, which is performed to detect the adulteration and authenticity of the honey. Question number 8, it's about the schemes and initiatives in India for welfare. First is about the SMILE initiative. अब SMILE 75 क्या है? It's a central scheme designated. पहला है ये सेंट्रल स्कीम है. फाइन. यहाँ पे याद रखना है it should be centrally sponsored or central sector scheme. Ministry of Social Justice and Empowerment is implementing a centrally sponsored scheme known as
Mission Vatsalya. Then the technology driven ONORC scheme is being implemented by Center for the Nationwide Portability of Ration Cards under NFSA Act 2013. अब ये देखना है that in the first two statements what is given is ministries. Fine. यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है. फाइन. दिस स्माइल 75 बिलोंग्स टू मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. हाउएवर दिस मिशन वत्सालय बिलोंग्स टू मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. देयरफॉर 1 and 2 आर रॉन्ग. और आंसर क्या है इसका? 3 ओनली, दैट इज सी. गॉट इट? दैट हाउ दिस इंटरचेंज इज देयर and maximum of the times ये interchange ऐसे ही होता है that in order to confuse you, it's not about giving you the correct information or the wrong information, it's about to checking whether you have the information blurry. क्या आपके revisions पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं? Fine. अगर आपके revisions पूरे हुए हैं then आपको ये पता होगा that Smile 75 is not under Ministry of Women and Child Development, however it's under Ministry of Social Justice and Welfare. Fine. So answer here will be C only. Moving to next question. Next question is question number 9. Fine. Question number 9 talks about sand mining, and first statement says that sand mining is the extraction of sand mainly through an open pit. Fine. Simple definition है ये, इसमें कुछ नहीं है. It's plain definition that yes, it's mining through an open pit like open mining we do for coal. ठीक है. Then the enforcement and monitoring guidelines for sand mining 2020 which were released recently 2 years back leads the push for online sales and purchase of sand and other river bed material. Fine. These guidelines were for sand mining only and they gave a push to it, ठीक है, for online sales. This is true because these sand mining guidelines they were there, and yes, they gave the push for such products of such riverbed materials. Then the Mines and Minerals Act 1957 has empowered state governments to make rules to prevent illegal mining, transportation and storage of minerals. Fine. तो sand का जो mineral है इस पे like 2019 में और 2018 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है. देयर इज वन यूपीएससी क्वेश्चन इन ऑन सैंड माइनिंग ऑल्सो अबाउट मेजर एंड माइनर मिनरल्स. देयरफॉर इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी कीप अ नोट ऑफ दिस थिंग दैट अगर ये गाइडलाइंस अभी आई है, दीज आर न्यूज़, अभी तक इस पे क्वेश्चन नहीं बनाया है यूपीएससी ने, सो दिस रिमेन्स देयर दैट देयर आर हाई चांसेस ऑफ दिस थिंग दैट इस पे क्वेश्चन बन सकता है. देयरफॉर ऑप्शन 1, 2 and 3, स्टेटमेंट 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट. देयरफॉर ऑप्शन डी विल बी द आंसर. फाइन. फर्स्ट वन वॉज डेफिनेशन एंड सेकेंड वन वॉज अबाउट गाइडलाइंस ऑफ 2020 एंड थर्ड वन इज अबाउट MMDR Act 1957. The last question for the day is question number 10 about India-European Union relations. That says that the first India-European Union summit was in June 2000. Fine. अब ये first summit कब हुई थी? You must be knowing this thing. Then comes the statement 2. It talks about the cooperation agreement which was signed in 1994, took the bilateral relationship beyond trade and economic cooperation. Fine. Beyond trade and economy, it took our relationship beyond trade and economy. Yes, obviously the thing is here कि अगर कोई भी कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया जाता है, फाइन, अगर कोई भी कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया जाता है, इट्स अबाउट इंक्रीजिंग द रिलेशंस नॉट डिक्रीजिंग द रिलेशंस. इसका नाम ही कोऑपरेशन एग्रीमेंट है. अब ये और क्या करेगा? लड़ाई तो थोड़ी कराएगा. ये जो कराएगा ये हमारा कोऑपरेशन बढ़ाएगा, ना कि लड़ाई कराएगा हमारी. फाइन. ना कि रिलेशनशिप को कम करेगा. द यूरोपियन यूनियन इज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर यूएस एंड रशिया एंड द थर्ड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स. दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ सेज टू थिंग्स. फर्स्ट, यूरोपियन यूनियन इज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. देन it talks about
US also being India's first largest trading partner, US being second, this Russia being second, and then third largest destination for India's exports. अब यह स्टेटमेंट इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड स्टेटमेंट है, it has too many facts into it which makes it incorrect, because यहाँ पे क्या हो सकता है, एक भी फैक्ट माइनर एरर एंड द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. देयरफॉर आंसर विल बी ऑप्शन सी. हियर इज द एक्सप्लेनेशन. विद दिस आई थैंक यू फॉर बीइंग हियर एट JV's IAS. Fine. And we wish you all the best for your preparations, and keep learning and keep in touch with us. We will be here in this series discussing the daily MCQs for next few months till we reach our prelims, so that all the current affairs portion will be covered through MCQs only. Thank you once again. Thank you.